Good evening, friends. So, today we shall start with section 38 onwards, which deals with transfer in case of immovable properties. So, whatever we were discussing from section 5 to section 37, everything was dealing with both movable as well as immovable property. But this particular subchapter of the chapter 2, that is from section 38 to section 53A, deals with transfer of immovable property. We shall discuss them one by one. So, our topic of discussion today is transfer of immovable property. So, as I told you, section 5 to 37, I've written 6. So, yes, actually 6 to 37 deals with both movable and immovable because 5 actually defines transfer of property. 6 to 37 deals with both general rules for transfer of movable and immovable property, whereas from 38 to 53A it is specific and it deals with transfer of immovable properties. So section 38, we had discussed 36, 37, that is apportionment. Now we're coming to section 38, which deals with transfer by persons authorized under certain circumstances to transfer. So basically this is talking about a case wherein there is a transfer, but the transferor here is not the absolute owner thereof. He has limited power of ownership and he is only uh, entitled to transfer the same when a specific circumstance exists. बेसिकली यही केस रे कौन होची जे गोटे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी सब नॉर्मली ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी रे कौन जहार प्रॉपर्टी से बिकी पारे बट केतेरे केस अछि जेतेले कि ट्रांसफर गोटे ट्रांसफरर रो राइट सब बेले न थाए बेले बेले तार राइट टा अक्रू करि पारे फॉर एग्जांपल जेंति एटोडे लिखिची गार्डियन ऑफ ए माइनर गार्डियन ऑफ ए माइनर माइनर रो गार्डियन जदी गोटे बिकिया को चाहूची से बिकी परिबो केते बेले जदी माइनर रो किछि लीगल नेसेसिटी थिबो नेक्स्ट इज गोटे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली रो कर्ता सी केते बेले बिकी परिबो सब बेले बिकी परिबोनी तार प्रॉपर्टी टाकू दो he has ownership but he still can't disposes the same all the time केते बेले बिकी परिबो लीगल नेसेसिटी थिबो फैमिली रो किबा स्टेट रो बेनिफिट पे हेटा दरकार थिबो किबा रिलीजियस किबा चैरिटेबल ड्यूटीज थिबो सेटा को ताको फंक्शन करियार थिबो ता पे से बिकी परिबो तो एई भलिया केसेस रे कि गोटे आउटे भी एग्जांपल देला तले विडो अछि सी अंडर हेडा ओल्ड हिंदू लॉ रे थिला एबे न्यू रे नाही ओल्ड हिंदू लॉ रे गोटे विडो जदी चाहुतला सेतेले केतेले बिकी परथला जेतेले तार नेसेसिटी अराइज करथला सो दिस काइंड ऑफ persons are only entitled to transfer a property only under happening or non happening of certain circumstances. So section 38 is talking about that situation when the transferor is having a limited power of transfer in respect of in respect of an immovable property. So basically ଯେତେବେଳେ certain circumstances ଥିବ then only they can transfer and ଯଦି ନଥିବ and ସେମାନେ transfer କରିଦେବେ then such transfer can be declared void. That means they can be voidable at the option of the persons affected by such transfer. तो ଏଇ ଯୋଉ लिमिटेड राइट अछि ट्रांसफर रो सेमा सेतेबेले जदी के ट्रांसफर कला लिमिटेड राइट अछि ट्रांसफर ओवर ए प्रॉपर्टी एंड सी स्टिल ट्रांसफर कला कोन कहि कि ट्रांसफर कला दैट सेई जो स्पेशल सर्कमस्टेंस ता जहां अंडर से लाइफ ता एलिजिबल अछि ट्रांसफर करिया पे से स्पेशल सर्कमस्टेंसेस ता एग्जिस्ट करूची इन जदी एलिगेशन माने एलिज करी कि से ट्रांसफर कला ताहेले से सिचुएशन रे कोन हबो दैट इज व्हाट सेक्शन 38 सेज तार ऑब्जेक्ट बेसिकली कोन जे जेतेला आपण गोटे कहंदु सपोज येटा ही कहूची ऑब्जेक्ट ता कोन
it is meant to protect the bona fide transferee who has purchased the same for consideration. So that means तो basically कौन एथरे कहूची जे गोटे लोकटे ए कौन करूची गोटे लोक से तार लिमिटेड पावर थिला ओवर दिस प्रॉपर्टी एक्स बट लिमिटेड पावर ऑफ ट्रांसफरिंग दी प्रॉपर्टी दैट मीन्स तार थिला कि सपोज ये होची गार्डियन गार्डियन ऑफ ए माइनर तो एटा नॉर्मली एक्स रो प्रॉपर्टी टा गोटे जे कि माइनर टा से गार्डियन अछि हे सेत पई जे बे मैनेज करूची से केते बेले बिकी परिबो जेते बेले आर नेसेसिटी थिबो कार माइनर रो नेसेसिटी थिबो से माइनर रो नेसेसिटी थिले बिकी परिबो सपोज एबे से कहूची जे हां माइनर रो नेसेसिटी अछि बोली से एलिगेशन दे की से कोन करूची ना बिकिया को ट्राई करूची देन इफ ही इज डूइंग दैट देन एठी गोटे लोक ताकू गोटे लोक को बिकिला से प्रॉपर्टी टा एबे से लोक जदी से जानिनी जे आर प्रॉपर्टी ऊपर फुल राइट्स नथिला स्टिल भी से बिकी दोची एबे से कोन हरण हबो ना बिकॉज़ ही इज ए ट्रांसफरी हु इज परचेजिंग द सेम फॉर कंसीडरेशन इन गुड फेथ से गुड फेथ रे प्रॉपर्टी टा किनुची विदाउट नोइंग दैट एर एठी मालाफाइड इंटेंशन थिला टू चीट से जानिनी जे एर लिमिटेड पावर थिला ओनली टू ट्रांसफर so this section has been made to protect the bona fide transferee for consideration. So this is what the section has the object in mind while framing the law. So it actual existence of the circumstance alleged not necessary. So whether actually minor necessity thila ei jo case example deli je a guardian of the property x जार जोटा कि एक्चुअली माइनर गोटे माइनर रो से कहला जे माइनर रो एबे पढ़ा पई यूएस जीवा पई पैसा दरकार सेत पई ये प्रॉपर्टी टा बिकुची सेई जो प्रॉपर्टी टा बिकिला alleging that he has a necessity that will be deemed that it will be presumed that such such special circumstances or such necessity as has been alleged that exists. So this is what section 38 says. तार condition कौन कहूची केते बेले section 38 will come into picture. First होची the transferor has limited power of transfer. तो transferor एठी limited power अछि to transfer the property. Second is on existence of special circumstances. केते बेले से लिमिटेड पावर टा आछि जते बेले लिमिटेड सर्कमस्टेंस स्पेशल सर्कमस्टेंस एग्जिस्ट करूची सेते बेले ओनली ही हैज लिमिटेड पावर ऑफ ट्रांसफर. थर्ड इज से जो ट्रांसफर टा हेतिबो दैट ट्रांसफर मस्ट हैव अकर्ड फॉर कंसीडरेशन पता माने जदी ग्रेचुइटियस ट्रांसफर हबो ताहेले एथरे इट विल नॉट बी एप्लीकेबल. तो एठी कोन हमें जेतु ट्रांसफरीटा जे किनिची से पैसा देई किनिची आ फसी जाईची ताकू बंचे पे हमें करूची तो जदी ताकू फ्री रे मिलिची ताहले कोन एबे ताकू बंचे किछि दरकार नै. सो एठी बेटर होची कि ताकू प्रॉपर्टी टाकू माने ट्रांसफर टाकू आपण जदी void डिक्लेयर करिया ताहले ही बेटर हबो. तो सेति पई ग्रेचुइटियस केस रे इट इज नॉट एप्लीकेबल बट इफ इट इज फॉर कंसीडरेशन and the transfer has a limited power of transfer and he has such limited power on existence of special circumstances. It has a condition. Fourth condition is if the transferor is alleging that the existence of a special circumstance. Say जो special circumstance under रे से liable or eligible to transfer से कहूची से special circumstance अछि से जो गार्डियन कहूची जे हां नेसेसिटी अछि सेति पई मु ट्रांसफर करची. एबे ट्रांसफरी जहा को बिकुथला जो ए बी को बिकुथला ए बिकुथला से तार रीजनेबल केयर लगेची टू ascertain that whether that special circumstances exist or not सेटा भी से एक्सरसाइज करिची. आउ भी कोन करची ट्रांसफरी गुड फेथ रे बिलीव करिची that existence of such condition believe भी करिची yes there was an existence of such condition. Then तार इफेक्ट कोन हबो that a presumption is drawn that such alleged special circumstances do in fact exist. So एठी कोन बाउथरे एग्जांपल टा हम देखंतु देखले जानि परिबे क्लियर हे परिबे कोन कहूची जदी ए गोटे प्रॉपर्टी ऊपर तार स्पेशल पावर थिला टू ट्रांसफर माने लिमिटेड पावर अछि टू ट्रांसफर सपोज ए एठी कहूची गोटे कर्ता ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली ए हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एचयूएफ टा ए प्रॉपर्टी ओन करूची
A being the karta, he has a limited power to transfer the property when there is a necessity, when there is it is required for the development of the state, or when it is a charitable duty or a religious duty. ତାହେଲେ କର୍ତ୍ତାର ପାୱାର ଅଛି ଏଚୟୁଏଫ ର ପ୍ରପର୍ଟି ହିନ୍ଦୁ ଅନଡିଭାଇଡେଡ ଫ୍ୟାମିଲିର ପ୍ରପର୍ଟି କୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିବାକୁ। ତ ଏବେ ଏ ଆଲେଜ କରୁଛି that ସେଇ ଯୋଉ ସ୍ପେଶାଲ ସର୍କମଷ୍ଟାନ୍ସ ଟା that necessity ଟା କିମ୍ବା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫ ଷ୍ଟେଟ ପାଇଁ ଦରକାର କିମ୍ବା ତାର ଗୋଟେ ରିଲିଜିୟସ୍ କିମ୍ବା ଚାରିଟେବଲ ଡ୍ୟୁଟି ଅଛି ବୋଲି ଏ ସେଟା ଆଲେଜ କରୁଛି that ସେଇ ସ୍ପେଶାଲ ସର୍କମଷ୍ଟାନ୍ସେସ୍ ଅଛି। ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ପେଶାଲ ସର୍କମଷ୍ଟାନ୍ସେସ୍ ଅଛି ବୋଲି ଆଲିଗେସନ ଦେଲା, ସ୍ପେଶାଲ ସର୍କମଷ୍ଟାନ୍ସେସ୍ ରେ ଅଛି ବୋଲି ଆଲିଗେସନ ଦେଲା, ତାହେଲେ ଯଦି ବି ଏଠି ପଇସା ଦେଇକି କିଣିଥିବ ମାନେ କନସିଡରେସନ ମାନେ 50,000 rupees ରେ ବିକିଛି, ଆଉ ବି ତାର ବି କଣ କଲା ନା ଏକ୍ସରସାଇଜ ବି କଲା, ହଁ ଦେଖିଲା ହରେ ହଁ ରେ ଏବେ ପରିବାର ତ ପୁରା ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଚଳୁଛି ତ ନେସେସିଟି ଥାଇପାରେ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଦେଖୁଛି ପୁରା ଛାତରୁ ପାଣି, ସେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଥିଲା ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କ ଛାତରୁ ପାଣି ଟପୁଛି, ତେଣୁ ସେ ଭାବିଲା ହଁ ଠିକ ଅଛି ତାଙ୍କର ନେସେସିଟି ଅଛି, ଲିଗାଲ ନେସେସିଟି ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ଦୋ ସେ ହିନ୍ଦୁ ଅନଡିଭାଇଡେଡ ଫ୍ୟାମିଲିର କର୍ତ୍ତା ଷ୍ଟିଲ୍ ସେ ବିକି ପାରିବ ବିକଜ ଲିଗାଲ ନେସେସିଟି ଅଛି। और माइनर को सତରେ जो माइनर ର ଗାର୍ଡିଆନ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆସିକି ଦେଖିଲା ଯେ ହଁ ମାଇନର ଆକ୍ଚୁଆଲି ୟୁଏସ ରେ ଆଡମିସନ ପାଇଛି, ତାକୁ ପଢିବା ପାଇଁ ଯିବା ଦରକାର, ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଯୋଉ ସ୍ପେଶାଲ ସର୍କମଷ୍ଟାନ୍ସ ଟା ପାଇଁ ସେ ତାର ରିଜନେବଲ କେୟାର ବି ଏକ୍ସରସାଇଜ କରିଛି, କିଏ ଟ୍ରାନ୍ସଫରି ମାନେ ବି ରିଜନେବଲ କେୟାର କରିଛି ଆଉ ଗୁଡ ଫେଥ ରେ ବିଲିଭ କରିଛି दैट ସେଇ ସ୍ପେଶାଲ ସର୍କମଷ୍ଟାନ୍ସେସ୍ दैट नेसेसिटी और जहां भी एलिगेशन ହେଇଛି ଯେ ଏଇ ସ୍ପେଶାଲ ସର୍କମଷ୍ଟାନ୍ସ अंडर ରେ ट्रांसफरर इज एलिजिबल टू ट्रांसफर, देन ଯଦି ସେଇ ସବୁ ହେଇଯାଇଛି ଏ ସବୁ କଣ୍ଡିସନ ହେଇଯାଇଛି ତାହେଲେ ପ୍ରିଜମ୍ପସନ ଧରାଯିବ ସେଇ ଯୋଉ ସ୍ପେଶାଲ ସର୍କମଷ୍ଟାନ୍ସେସ୍ ଟା ଆଲେଜ କରିଥିଲା ଟ୍ରାନ୍ସଫରର that exist। so ଏଠି ଗୋଟେ ପ୍ରିଜମ୍ପସନ ଡ୍ର କରିବ ଲ that ସେ ଯୋଉ ଇଏଟା ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରୁଛି ଏଠି। ଯଦି ଏବେ ଏବେ ଆପଣ କହିବେ କି ଯେ ଯୋଉ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରୁଛି ତା ମାନେ କଣ ଟ୍ରାନ୍ସଫରଟା ପୁରା ସବୁବେଳେ ଭ୍ୟାଲିଡ? ଟ୍ରାନ୍ସଫରଟା ଭ୍ୟାଲିଡ ବଟ voidable। ଯଦି ଏବେ ହିନ୍ଦୁ ଅନଡିଭାଇଡେଡ ଫ୍ୟାମିଲିର ଯୋଉମାନେ ପ୍ରପର୍ଟିରେ ଆଫେକ୍ଟ ହଉଛନ୍ତି, ହିନ୍ଦୁ ଅନଡିଭାଇଡେଡ ଅଦର ମେମ୍ବର୍ସ ମାନେ, ସେମାନେ ଆସିକି ଏବେ ଆଲିଗେସନ କଲେ ନାଇଁ ଇନଫ୍ୟାକ୍ଟ ସେମିତି କିଛି ନଥିଲା, ସେମିତି ଯାହାବି ଆଇଦର କନସିଡରେସନ ନଥିଲା ଅର ତାର ନୋଟିସ ଥିଲା ଟ୍ରାନ୍ସଫରିର ଅର ଏଠି ଇଏ କରିଛି, ଯଦି ସେ ସବୁକୁ ପ୍ରୁଭ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ ତାହେଲେ ସୁଟ କରିକି ତାକୁ ଭଏଡେବଲ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଭଏଡେବଲ କଲା ବେଳକୁ ତାକୁ ପଇସା ଦେବାକୁ ପଡିବ, ଟ୍ରାନ୍ସଫରିକୁ ଯାହା ପଇସା ଦବ ଏ ତାର କମ୍ପନସେସନ ଦବ ଯାହା ବି ଦବ ସେଟା ଠିକ ଅଛି, ବଟ ତା ମାନେ ଖାଲି ଏତିକି ଯେ କଣ୍ଡିସନର ମାନେ ଏତିକି ଯେ the existence of condition will be presumed, so that condition or that special circumstance under which the transferor had that limited power of transfer, that will be presumed that it existed, where the transfer is done for consideration and the transferee has exercised reasonable care to ascertain the existence, and he in good faith believed that such condition in fact exists. So all of this, if they are done, then it will be presumed that such condition or such special circumstance in fact exists। exception कौन? ଯେତେବେଳେ transfer notice ଥିବ about the non existence of such circumstance, such special circumstances, ତା ମାନେ transfer ଏଠି ଯଦି ଜାଣିଥିବ ଯେ ତାଙ୍କର necessity ନାହିଁ but still ସେ ବିକୁଛି, in that case it will not be applicable। second, where the transferee is not acted in good faith, transferee ଯଦି good faith ରେ act କରିନି, ତାର malified intention ରେ ଜାଣିକି ବି ସେ ଚୁପ ହେଇକି ରହୁଛି। third is when the transferee has not tried to exercise reasonable care to ascertain, तो ଯଦି ट्रांसफर ଟିକେ ରିଜନେବଲ କେୟାର ଲଗେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ସେ ଜାଣି ପାରିଥାନ୍ତା ଯେ ସେ ଯୋଉ ସ୍ପେଶାଲ ସର୍କମଷ୍ଟାନ୍ସ ଟା ଆଲିଗେସନ ଦେଉ କରୁଛନ୍ତି ସେଟା ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରୁନି, ମାନେ ତାର ନେସେସିଟି ନାହିଁ କିମ୍ବା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫ ଷ୍ଟେଟ ପାଇଁ ଦରକାର ନାହିଁ ଏଚୟୁଏଫ କେସ ରେ, କିମ୍ବା ଆଉ କିଛି ଯାହା ବି ସ୍ପେଶାଲ ସର୍କମଷ୍ଟାନ୍ସେସ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେ ରିଜନେବଲ କେୟାର ବି ତାର ଆସର୍ଟନ କରୁନି, କରିବା ପାଇଁ ଲଗଉନି, ଦେନ୍ ଇନ दैट କେସ ଏଇ ସେକ୍ସନ ଟା ଆପ୍ଲିକେବଲ ହବନି। এই কেসটা হনুমান প্রসাদ কেসরে this principle had been laid down by the Privy Council। এই কেস এথরে আপনକୁ এতি ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ବର୍ଡନ ଅଫ ପ୍ରୁଫ ଟା କାହା ଉପରେ ଲାଏ କରୁଛି, ଟ୍ରାନ୍ସଫରି ଉପରେ ଲାଏ କରୁଛି, ଯୋଉ ଯିଏ ଯିଏ ଯାହା ପାଖକୁ ବିକା ହେଇଛି ସିଏ ତା ଉପରେ ଲାଏ କରୁଛି, ଯେହେତୁ ସିଏ
एबे गुड फेथ रे ताकू प्रोटेक्ट करा होची ना ए सेक्शन रे ताकू प्रोटेक्ट करा होची ट्रांसफरी को जे परचेज करिची फॉर कंसिडरेशन and he has acted in good faith believing that the existence of such special circumstances under which the transferor was capable of making the transfer. So in that case he will be having the burden of proof to justify the circumstances and that he had made proper inquiry to ascertain the circumstance, but even if he did that he could not join it. That is why it was the section 38 where it will come to the rescue of a bona fide purchaser. It concept hoji je gote bona fide transferee je achi he will be protected. This is the tapare asila next is this is over. Section 38 is thus over. Now coming to section 39. Now again section 39 is talking about a case. Basically ସେଥିରେ ଯେମିତି କହିଲା କି ଯେ ଏଥିରେ 38 ର ଇନଫ୍ୟାକ୍ଟ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ ଅପୋଜିଟ ଜିନିଷଟା କହୁଛି ସେଠି 38 ରେ କ'ଣ କହୁଥିଲା ଯେ ଟ୍ରାନ୍ସଫରି ହାଜ ଏ ବେନିଫିଟ ଟ୍ରାନ୍ସଫରି କୁ ଆମେ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରୁଥିଲେ ରାଇଟ କୁ ତ ଯଦି ଟ୍ରାନ୍ସଫର ର ରାଇଟ କୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରୁଛେ କି ଯିଏ ଗୁଡ ଫେଥ ରେ କିଣି ଦେଇଛି ଆଉ ତା ରାଇଟ ଟା ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ ହେଇଛି ସିମିଲାରଲି ଯଦି ଟ୍ରାନ୍ସଫରି ଜାଣିକି ବି କିଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ନଉଛି ତାହେଲେ ତା ସହିତ ଯାହା ବି obligation ଅଛି ସେ ପ୍ରପର୍ଟି ଉପରେ ସେଇଟା ବି ତା ଉପରେ ଯିବ ତା ମାନେ ଏବେ ଯେହେତୁ ପ୍ରପର୍ଟି ଟା ବିକିଲା ବେଳକୁ ସେ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ ଟାକୁ ଆମେ ଭ୍ୟାଲିଡ କରୁଥିଲେ କାହା ପାଇଁ ଟ୍ରାନ୍ସଫରି ର ବେନିଫିଟ ପାଇଁ ଟ୍ରାନ୍ସଫରି ଗୁଡ ଫେଥ ରେ ନେଇଥିଲା still ତାକୁ ଆମେ ଆମେ ଯେହେତୁ ବି କଣ୍ଡିସନ ଟା ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ ନ କରୁଥିଲେ ବି we were presuming that condition was existing. section 38 ଏଠି ରାଇଟ ସହିତ ଗୋଟେ obligation ବି ଦଉଛି ଟ୍ରାନ୍ସଫରି କୁ କ'ଣ obligation ଦଉଛି 39 40 ଦିଟା କୁ ଇନଫ୍ୟାକ୍ଟ ଟ୍ରାନ୍ସଫରି କୁ ଗୋଟେ obligation ଦଉଛି 38 ଟା ଯେମିତି ଗୋଟେ transferee को गोटे right देला that he had a right to allege that such circumstances under which the transferor was capable of making that transfer. In that case he was protecting that transfer. से कोन करथला ता ट्रांसफर टाको वैलिड करिया को रखि अलाउ करथला आ से कहउतला कि नहीं ट्रांसफर टाको वैलिड हो even if it was not done. तो but एठी 39 रे कहउची that जदि गोटे ट्रांसफरी को किछि ट्रांसफरी गोटे जिंस किणुची आ तार नोटिस अछि दैट सर्टेन ऑब्लिगेशन आर अटैच्ड टू दैट प्रॉपर्टी देन व्हाट विल बी द फेट इन दैट केस 40 also talks about that 39 and 40 talks about if any obligation is attached to the property whether the transferee who has purchased the same and he has a notice thereof whether he will be liable or not. 39 रे कहला conditions which are required to be fulfilled in order to section 39 to be applicable is first होची a third person has a right to receive a maintenance provision for advancement or marriage. ता माने एठी गोटे आपन को एग्जांपल दे देले आपण बुझी परिबे कोन कोची that there is a property it would a property अछि x which is belonging to a एठी ए कोन करथला ए राइट ए x रु मेंटेनेंस दोथला जणो का d को मेंटेनेंस दोथला और ताको गोटे एडवांसमेंट मिलुथला ए प्रॉपर्टी रु का e को और f रो मैरिज पई ए प्रॉपर्टी रु थिला कि यार प्रॉफिट्स रु ए प्रॉपर्टी रो प्रॉफिट्स रु एफ रो मैरिज हबो जदि ए तीनटा जिंस पई ए प्रॉपर्टी रु से आइदर ताकू मेंटेनेंस मिलुथला चलुथला किबा एडवांसमेंट मिलुथला किबा मैरिज पई ए प्रॉपर्टी रो प्रॉफिट रु यूज होथला then in that case if that property A is transferred to B and B has notice of such maintenance or advancement or a marriage provision that was arising from the property जो तार notice अछि एटी transferee B जदि तार notice अछि and in that case he will be liable for maintaining the
और जदि एडवांसमेंट दउथो ई को ताले एडवांसमेंट दबो किंबा जदि एफ को मैरिज करियार थिबो ताले ताकू भी बाहागर करेबो से प्रॉपर्टी रो प्रॉफिट्स रु. So here it is saying that if the third person has a right to receive maintenance, provision for advancement or marriage from the where from the profits of an immovable property, and if such property is transferred and the transferee has notice of such provision, बी जे ट्रांसफर थिला तार नोटिस थिला और जदि तार नोटिस नथिला भी ताहेले ताको फ्री रे देथिला. जदि कंसीडरेशन रे अछि पैसा देकी किनिची 50,000 टका देकी किनिची 50K देकी किनिची देन तार नोटिस थाउ न थाउ जदि नोटिस अछि जदि प्रॉपर्टी टा कंसीडरेशन देकी किनिची ताले नोटिस थिबा दरकार 50K थिले ताको नोटिस थिबा दरकार. आ जदि फ्री रे किनिची फ्री रे पाइची ताले नोटिस थाउ किमा न थाउ she will still be getting it. No notice, it doesn't matter. Jodi it is if he has obtained the same for free. But jodi पैसा देई किनिची ताहेले तार नोटिस थिबा दरकार. जदि नोटिस थिबो ताहेले he will be liable. काहे ना से जानि थिला जे ए माने मेंटेन होउचंती किबा एडवांसमेंट मिलुची किबा बाहागर आर प्रॉफिट रु बाहागर तार हबर अछि स्टिल देन से पैसा देई किनला ता माने एबे ता ऊपर जो माने डिपेंड करथिले जो डिपेंडेंट्स शुड नॉट बी हैरेस्ड. सो एठी जेंति 38 रे गोटे राइट एंटाइटल कला बी को ट्रांसफरी को दैट एमती केस रे ताकू करि परिबो स्टिल से जो एलिज करिछि सेटा करि परिबो एटा को डीएफ को जदि से मेंटेन करिवार प्रोविजन थियो से प्रॉपर्टी ट्रांसफर हबो ताले ट्रांसफर ऊपर गोटे ओब्लिगेशन भी आसी जाउची जदि से कंसीडरेशन रे किनी की नोटिस अछि तार किंबा जदि ग्रेच्युटी अछि जदि फ्री रे पाई जाछि स्टिल भी ताकू मेंटेन करिया पड़ियो कारण तू तो किछि पैसा देइनु तनु तते मेंटेन करिया को ही पड़ियो. जदि पैसा दे किनिछि ताले तार नोटिस थिया दरकार जदि जानि नथिला नोटिस नथिला से किनि देछि पैसा देकी ताले एटा एप्लीकेबल होनी काहेकि कारण मु जदि जानि थांती मे भी जे एथे ना भसोडी अछि ता भितरे जे मते एना तीनटा झियोंकर सेतरु बाहागर करा अछि से प्रॉपर्टी तो सेठी इन दैट केस मु तो मे भी 50,000 टका दे किन थांती मु तो कहथांती अरे एते पैसा तो कोन लागिवो कोन ताका बाहागर भी करबी मते कोन मिलियो. सो इन दैट केस जदि प्रॉपर्टी टा ट्रांसफर होची आउ बी रो जो ट्रांसफरी रो नोटिस अछि ट्रांसफरी टा नोटिस अछि जदि से कंसीडरेशन रे किनिची किबा जदि ग्रेच्युटी अछि ताले नोटिस थाउ न थाउ if that both the things are done then in that case what will be the effect? The effect will be that right may be enforced against the transferee. So जहा कहली सेठी से जो मेंटेन करिया को राइट थिला जो मेंटेन करिया को जो राइट थिला जो डीईएफ करो किमा बाहागर राइट थिला एफ रो कि ई पाई करथिला एडवांसमेंट से माने एनफोर्स करि परिबे दैट against B who had notice of such a provision if he had purchased it for consideration or even if he had no notice then if it was for free then in that case seta se right ta enforce he paribo on the transferee. But exception kono jodi transferee ro notice नथिला and he got it for consideration ta mane jodi se paisa dei kinithila किंतु से जानी नथिला जहा कहली से जानी नथिला जे एथरु तीनटा जियंकर बाहागर करिया से प्रॉपर्टी रो इनकम रो then in that case it will be an exception or the property in his hands ता माने ता हाତରେ से प्रॉपर्टी टा अछि in that case those will be exception and right may be enforced against the transferee. It's very simple. Section 40 is also in similar light that is saying एथिरे भी सेया ही कहूची जे ट्रांसफरी रो गोटे राइट गोटे ओब्लिगेशन जेमति 38 रे गोटे राइट देथिला जे ए केस रे प्रिज्यूम करा जिवो दैट existence of certain circumstances under which the transferor was capable and hence the transfer was deemed valid. So the 3940 रे जदी राइट दिया हिची 3940 रे दिटा ओब्लिगेशन दियाला 39 रो ओब्लिगेशन पडिले दैट मेंटेनेंस राइट जे थिबो किबा एडवांसमेंट राइट थिबो किबा बाहागर करे थिबो से प्रॉपर्टी रू then in that case it will be done accordingly and the transferee will be liable to maintain or give advancement
or make sure that the marriage of the certain person happens from the income of the property if he had notice of that provision, or if the transfer was gratuitous. But tapare section 40 ta कहला the burden of obligation imposing restriction on use of land. Burden of obligation imposing restriction on use of land. ଏଥିରେ ଆମକୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ this is linked to section 11 of transfer of property act. section 11 of transfer of property act ଟାକୁ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ section 11 ରେ କହୁଛି ଯେ restriction repugnant to interest created. ତ କଣ କହିଥିଲା ଯଦି transfer of property ରେ ଗୋଟେ interest create କରାହଉଛି ଯୋଉଟା କି absolutely ଗୋଟେ ଲୋକକୁ transfer କରାହଉଛି କିମ୍ବା interest create କରାହଉଛି, then the terms of the transfer ରେ ଗୋଟେ condition ଆପଣ ରଖିଲେ that ସେ ଗୋଟେ particular manner ରେ ହିଁ enjoy କରିବ, ତାହେଲେ ସେ ଧରା ଯାଉଥିଲା ସେ interest ଟା ସେମିତିଆ condition ଟା void. but ଯଦି ତାର beneficial enjoyment ପାଇଁ ଗୋଟେ property ର beneficial enjoyment ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ property ଉପରେ କିଛି condition fix କରାହେଲା, then ସେଥିରେ ସେ ଯୋଉ ରାଇଟ୍ ଟାକୁ ଆମେ ଏନଫୋର୍ସ କରିପାରୁଥିଲେ. ଆମେ ସେଥିରେ ଦେଖିଥିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ପ୍ରପର୍ଟିର ଯଦି ରାଇଟ୍ ନଥିଲା ତାହେଲେ ବି ତାକୁ ମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ୱେରେ ତାକୁ ଆମେ ଏନଫୋର୍ସ କରିପାରୁଥିଲେ. ଯେମିତି କି ସପୋଜ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଆପଣଙ୍କୁ ଦଉଛି, ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ. My pen is not working today. Okay, so the example that I was giving was कि A कौन करुची गोटे there is a piece of land which belong to A, ता आगरे गोटे पब्लिक रोड सपोज जाइछि. ये जो लैंड टा थिला that belong to A, से कौन कला ना ता ऊपर गोटे 5 फीट रोड छाड़ी की रखतिला. 5 फीट रोड गोटे छाड़ी की रखतिला तार निज लैंड ऊपर 5 फीट रोड. से लैंड टा को से कौन करत से जो 5 फीट रोड टा को तार लॉन भळा यूज करतिला कि आउ ता मझरे गोटे रास्ता रखतिला जोडा कि ता घर जो ता घरटा एठी हितला ए जो बाकी लैंड रे. तो जदि एमती ए ताकू यूज करूथिला, इन दैट केस जदि एबे ए बी को बिकुथिला ताले बी कोन करथुला ना लायबल होतुला जे आमे कहउथुला जे से कंडीशन रखिबो एठी 11 में पढिचे जदि से कंडीशन रखिबो जे ए जो प्लान टा से बिकिला बी को ए पार्ट टा खाली बिकिला बी को आ कहिला जे देखे मो जो पार्ट टा बिकुजी तू घर कर किछ ने जा करचु कर यूज कर, बट एठी मते रास्ताडा छाडिबी. जो रास्ताडा करथुला which was for what, which was for more beneficial enjoyment of this property. तो जदी सेमती गोटे कंडीशन करथला सेक्शन 11 रे सेटा वैलिड कोथले. एबे सेक्शन 40 is taking it a notch higher. It is talking about the fact when it is ए जो बी को ट्रांसफर करी से कंडीशन टा कहितला सेटा तो वैलिड हला. एबे बी कोलानी कोन ना सी को ट्रांसफर कलानी कोडा ए जो पीस ऑफ लैंड टा that is being transferred to C. Now A is a third person. एबे जो ट्रांसफर हला between B to C of this land, he was a third person. So what will be the effect thereof, and whether C, who has obtained the land which had a condition attached or a covenant attached that ए जो part of land रे से रास्ता सबले छाड़ी की रखिबो, किंबा जदि गोटे लोन अछि से कहउतला से लोन टा सबले मेंटेन कर रखिबो, तेंते जदि किछि कंडीशन करूची whether that will be valid, that is what section 40 says. section 40 टा को हम बेयर एक्ट पढले, it is टिके कंफ्यूजिंग कर देछि, but it is easy. Let's read the bear act first. bear act कहउची where for the more beneficial enjoyment of his own immovable property. ता माने गोटे लोक तार निजर म्यूवल प्रॉपर्टी रो एन्जॉयमेंट पई कोन करची हैज थर्ड पर्सन माने सेही लोकटा को ही थर्ड पर्सन एबे कहूची. काई थर्ड पर्सन जेतु एई जो कॉन्टेक्स्ट आपन बुझेली केमती ए थर्ड पर्सन हला दो एठी एटा निजर लैंड रो एन्जॉयमेंट पे करची, किंतु एई जो बी सी को ट्रांसफर कर देलानी जेबे आउथरे एबे ए तो से कॉन्टेक्स्ट थर्ड पर्सन ना. तो दिस सेक्शन इज टॉकिंग अबाउट दैट केस. सो एठी ए थर्ड पर्सन who is not even concerned with the transfer right now, जो B एबे C को ट्रांसफर कला, but he has कौन independently of any interest in the immovable property of another, independently of any immovable property, independently of any interest in the immovable property of another or of any easement thereon. ता माने आ ऊपर जहा थिला ए प्रॉपर्टी ऊपर राइट तार किछि नाही,
ए प्रॉपर्टी ऊपर स्टिल से जो गोटे कंडीशन अटैच करिथिला किए ए पूर्वरु a right to easement there a right to restrain the enjoyment in a particular manner of the latter property से कहिथिला जे थर्ड पर्सन जोटे तार गोटे करथिला जे एई जो इयाटा को करिवो आउ कोन where a third person is entitled to the benefit of an obligation arising out of contract and annexed to the ownership of the property ता माने एटा तो गोटे कहली ए जो इजमेंट केस रे जे ताकू से निजे रखथिला निजे गोटे राइट थिला करियाकू किंबा गोटे कॉन्ट्रैक्ट रे से कहिथिला जे এই ট্রান্সফারটা মু তোতে করুচি বাট তু মতে এই বেনিফিটটা দবু এই जो ইয়েটা দবু এই এমতি গোটে বেনিফিটটা দবু যে তা উপরে যাই পারিবি और ता सेपटे तू कहबू एपटे जाई पारि बोली कहबू कबा इजमेंट रो एग्जांपल ता हबो कोटा एक्चुअली प्रॉपर एग्जांपल हबो जे मु कहितली जे तू करिवू किंतु मो साइड पटे केबे झरका करिवू सो दैट मोर जो इजमेंटरी राइट ऑफ लाइट दैट विल बी नॉट अफेक्टेड इफ दिस टाइप ऑफ conditions have been imposed then what will be the effect and whether the third person will have any say in that and the third person can be protected who is trying to exercise a right over a property over which he has no interest whatsoever because the transfer is between a first party and second party now a third party who had originally obtained either से कोवेनेंट रे से ऑब्टेन करिछि किबा इजमेंटरी राइट थिला कि जे कहितला कि जे लाइट टा पई तू विंडो करिवनी और समथिंग और एमती किछ गोटे करिछि दैट राइट टू रिस्ट्रेन एन्जॉयमेंट इन अ पर्टिकुलर मैनर बोली गोटे फिक्स करिछि देन इन दैट केस व्हाट विल बी द कंडीशन फर्स्ट कंडीशन होछि कोन हम पढले दैट ऑन ए प्रॉपर्टी ए थर्ड पर्सन इज हैविंग a right to restrain the enjoyment in a particular manner arising independently or of an easement or B रे benefit of obligation arising out of contract annexed to immovable property not being an easement एठी easement नुह किंतु गोटे contract to गोटे obligation arise करूची then in that case जदि एमते किछि benefit से property रु arise करूची कहा favor रे third person favor रे and right now the transferee has noticed that this जो not to enjoy it in a particular manner और जो गोटे कोवेनेंट थिला which is arising out of a contract and it is annexed to an immovable property that exists से ट्रांसफर जदी जानी थिला और जदी नोटिस न थिला transferee has notice or if no notice if it is such right or obligation may be enforced against a transferee with notice thereof or a gratuitous transferee of the property affected thereby और एठी लिखते एठी जदी तार नोटिस थिला और जदी नोटिस नाही ताले if it was gratuitous then what will be the fate what will be the fate that right may be enforced against the transferee so here the right will be enforced against the transferee ता माने एबे थर्ड पर्सन कहि परिबो that even if more kichi independent right nathila over this property which was being transferred by the transferor to the transferee still then just because I had this right over that property to be not to be enjoyed in a particular manner or that it was I was getting that benefit because an obligation was put which was arising out of a contract then in that case such right or obligation may be enforced against a transferee with notice thereof जदि notice थिबो ताहेले और जदि gratuitous थिबो ताहेले notice नथिले भी चलिबो but जदि transferee रो notice नाही and he got it for consideration or the property is in his hands then in that case it will not be exercised एठी हमको आउट जिस भी जानियो पड़िबो that a negative covenant can be attached but positive covenant cannot be attached ता माने एठी आपण जो आपण कहिबे जे गोटे right to restrain the enjoyment in a particular manner that is fine ता माने आ एग्जांपल आपण दोची सेठी कोन कहिबे जे एई पटे रास्ता करिवुनी और एई पटे विंडो करिवुनी दैट इज अ नेगेटिव कोवेनेंट बिकला को मु कहिली जे मु ए प्रॉपर्टी बिकुची बट एपटे रास्ता करिवुनी और एपटे विंडोडा करिवुनी दैट इज फाइन बट एई लॉन टा जो बिकुची तार ग्रीनरी सबले मेंटेन करिवु
that is a positive covenant. Positive jati apan jani thante je negative covenants can be attached but positive covenants cannot be attached. That means you can direct not to do a particular thing but you cannot direct to do a particular thing in a particular manner. So it section 3940 basically etiki hi kochi apanku in a nutshell. If we try to understand 39 and 40, it is basically giving the benefit right now to any persons who are affected by the transfer. 38 रे हमें ट्रांसफर रे राइट को प्रोटेक्ट करथिले किंतु एटी 39 40 रे हमें जो माने जो persons माने even though they are being third persons and they are being affected by the transfer, how 39 38 रे 39 रे कोन कोथिले जे मेंटेनेंस तार राइट थिला किबा तार बाहागर से प्रॉपर्टी होवर थिला प्रॉपर्टी रो किबा एडवांसमेंट थिला, then in that case if it was transferred and the transferee had notice thereof or the transferee got it for free, then in that case it was being enforced against the transferee. 40 रे कोन कहला जे गोटे थर्ड पर्सन रो एठी राइट थिला that the property should not be enjoyed in a particular manner or से property रो किछि गोटे benefit ताकू मिलिवार थिला which was benefit of an obligation, but obligation ताकू थिला से property ऊपर which was from a contract. से first होची जेतेले ताकू हमें either गोटे independently or from an easement, second टा होची जेतेले contract रो ताकू मिलिला, then in that case दीटा केस रे धरा जीव जदी ट्रांसफरी रो नोटिस थिला किबा जदी नोटिस नथिला ताहले in that case if it is gratuitous then it will be presumed that the transferee right now will be bound by such condition. So if transferee को liable करा जीव that yes though तू एबे लीड करि पारु जे नो तोर मु एना थर्ड पर्सन को काहे की देबी से राइट टा मु काहे की एन्जॉय करबी ने पर्टिकुलर मैनर काहे ना मोते जे ट्रांसफर करजी से तो से राइट से कंडीशन को पुट करिनी, बट सेटा हेंती हे परिबनी सेठी जो कोवेनेंट टा नेगेटिव कोवेनेंट टा एठी आपण एती जानि थिबे जे नेगेटिव कोवेनेंट द रूल इज दैट नेगेटिव कोवेनेंट runs with the land while the positive covenant cannot. So if there is a negative covenant for not to use the property in a particular manner, then in that case even if it has been transferred to one hand to another tapre seta out third person ku third or fourth ku, still then that will run with the land and all the persons all the transferees who have obtained the same for consideration or all the transferees who have got it gratuitously, then in that case they will be liable by such negative covenant. This is what section 38, 39 and 40 says. So this completes our discussion today. If anyone has any doubt, they may put it right away. I'm not well, so probably that is the reason I couldn't take the class properly also. Anyway, you may put your questions if there is any. Prithiman has a doubt. Please ask. Sir, good evening, sir. Good evening. Sir, in illustration, I didn't get that point. Which illustration? Sir, barrack was section 38. 38 रो illustration. 38 रो illustration टा तो से ही कहूची जे सेठी कहूची जे a Hindu widow whose husband has left collateral heirs. आपन को एते कॉम्प्लिकेटेड कर बेसी लिखि बोले आपन भाबुचंती मु आपन से ही कहितली जो widow के under the old Hindu law ए एग्जांपल टा एक्चुअली एबे लॉ रे वैलिड करू under the old Hindu law कहितला सते बेले a widow was only entitled to transfer a property only if they had legal necessity to transfer the same. Only in that case the widows were entitled to transfer a property. तो सेठी कहूची जदी the widow was entitled to transfer a property केते बेले जेतेले गोटे तार लीगल नेसेसिटी अराइज करतले, सो एठी तार अलगा हेयर्स थिले तणु समस्त ता ऊपर डिपेंड थिले गोटे लोकटे जेतेले मरि जीवो तार खाली तो स्त्री थिबो बोली नथिबो अलगा लोक भी थिबे जे माने डिपेंडेंट थिबे, तो सेठी कहूची जे विडो जेतेबेले एबे कोलैटरल हेयर्स माने अलगा हेयर्स थिला बेले भी से ट्रांसफर करूची alleging that she was under a necessity, she was under a legal necessity to transfer the same, then in that case धरा जीव जदि ट्रांसफरीटा रिजनेबल केयर एसर्टन करिकी
ଭାବିଛି ଯେ ଗୁଡ ଫେଥରେ ଭାବିଛି ଦ୍ୟାଟ ସେ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ ଅଫ କଣ୍ଡିସନ ଥିଲା ତା ମାନେ ଲିଗାଲ ନେସେସିଟି ଥିଲା, ତାହେଲେ ଧରାଯିବ ଦ୍ୟାଟ ସେ ଲିଗାଲ ନେସେସିଟି ଅଛି। ତ ସେୟା ହିଁ କହୁଛି ଯେ ଏ ହିନ୍ଦୁ widow whose husband has left collateral heirs alleging that the property held by her as such is insufficient for her maintenance। ତା ମାନେ ତାର ସେଟା ତାର ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ପାଇଁ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ନାହିଁ। ଏଠି କଣ କହୁଛି, ଏଠି ଲିଗାଲ ନେସେସିଟି କଥାଟା ନ କହିକି ଏଠି ସେ କହୁଛି ଇନସଫିସିଏଣ୍ଟ ଫର ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ। ତ ଇନସଫିସିଏଣ୍ଟ ଫର ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ କେସରେ ବି ଏଟା ଆପଣ କରିପାରିବେ। ତ ସେଠି ଯଦି କହୁଛି ଯେ ତାର insufficient maintenance ପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ କଲି, then in that case if B satisfies himself by reasonable inquiry that the income from the property is insufficient for his maintenance and that sale of the field is necessary, and acting in good faith he bought the field from A, then as between B on one part and A and the collateral heirs on the other part, a necessity for this sale shall be deemed to have existed। ସାର୍ ଆପଣ ଯୋଉ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଟା ଦେଇ ବୁଝେଇଥିଲେ, ସେ ଏ ହିନ୍ଦୁ କର୍ତ୍ତା ଯୋଉ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିବ ପ୍ରପର୍ଟି ମାଇନର କୁ ଯୋଉ ଦରକାର ଅଛି ସେଲ୍ କରିବ, ସେ ଟାଇପ ର ଆଗେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ନା ଇଲଷ୍ଟ୍ରେସନ ନା ସାର୍। ହଁ ସେ ତ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ଏକ୍ସାମ୍ପଲଟା ଆପଣ ଯଦି ସେଥିରେ ଜାଣିବେ ଯେ ହିନ୍ଦୁ ଅନଡିଭାଇଡେଡ ଫ୍ୟାମିଲିର କର୍ତ୍ତା କେତେବେଳେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିପାରିବ, ହି କ୍ୟାନ୍ ଓନ୍ଲି ଟ୍ରାନ୍ସଫର ଓନ୍ଲି ୱେନ୍ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ନେସେସିଟି ଥିବ, ଲିଗାଲ ନେସେସିଟି ଥିବ, କିମ୍ବା ତାର ଇଷ୍ଟେଟର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଦରକାର ଥିବ, କିମ୍ବା ତାର ଚାରିଟେବଲ କିମ୍ବା ରିଲିଜିୟସ୍ ଡ୍ୟୁଟି ଥିବ, in that case he can transfer it। and ଏଇ କେସରେ ସେ ଆଲେଜ କଲା କି କର୍ତ୍ତା ଆଲେଜ କଲା କି ହଁ ସେମିତିଆ ଇନଫ୍ୟାକ୍ଟ there is an existence of that condition and that is the reason it is being transferred, then in that case it ଧରାଯିବ that ସେ condition ଟା exist କରୁଛି। this is what the ଓକେ section says। ଓକେ ସାର୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍। okay, thank you। so we'll end the session here। if there is any doubt you may ask। okay, ending the session today। thank you, we'll meet on Monday and we'll start with CPC।